Okay. So it's clear. So I'm starting now, student. It's already 1:04. So let's begin the session. Uh, yes, thank you, Manthan. So let's begin the session. So today we are going to do networking in Java, socket programming. So how you communicate to each other. There is some mechanism. Your mechanism of communication is what? Your voice. So you say something and the person who you are communicating listens to you. Similarly, how programs communicate to each other or how application communicate to each other, that we are going to learn today. Okay. So there is not existing actual human being or possibility of that human being are also interacting. So we have to see how this communication happens over a network, or if you are transferring data, how this data transferred over a network. So again, it comes under advanced Java topic, that is your networking concept. So in Java, communication is possible by various means, but today we are going to do socket programming. Java communication can be done using socket programming, can be done RMI, can be done Corba, वेब सर्विसेज, सो मेनी मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल. बट हम लोग आज क्या लर्न करेंगे? हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग लर्न करेंगे. सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, हाउ सर्वर कनेक्ट्स टू अ क्लाइंट, एंड अगर एक दोनों को मैसेज भेजना है, किसी को कुछ सेंड करना है, कोई सेंड कर रहा है तो रिसीव करना है, तो वो सब आज करेंगे. But to begin with all this thing, we need background of what? Networking and socket programming in Java. Because till now what you have done, you have learned the things like core Java, creating classes, creating objects, calling methods, and that's all. Okay. But here we have a very different programming. You have to establish connectivity with someone to whom you want to connect, like how you do telephonic conversation. You dial some number to whom you want to connect. Am I right? So similarly यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा आपको किसके साथ कनेक्ट करना है. तो वो सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. I hope you all are excited for this session. Yes, type yes if you are excited for this concept or this session. And student, please share this link and ask other student also to join so that they can also get benefit. और इसमें से आप लोग में से अगर किसी ने भी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब इट. ओके. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Okay, so socket programming in Java, also called as networking in Java. आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, बट प्रिफरेबली सॉकेट प्रोग्रामिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज जावा में कम्युनिकेशन के लिए देर आर अदर मैकेनिज्म ऑल्सो अवेलेबल. सो देयरफॉर आई से सॉकेट प्रोग्रामिंग इन जावा. So let's begin with the session. So the objective of today's session is what? To understand the API known as java.net. Like you all are familiar with the API, application programming interface. If you want to use something in Java, or if you want to work with some of the classes, you need to use what? API. Like if you have attended my previous session, you might be knowing we have used the API java.awt, java.awt.event, as well as there are
some general API available like java.lang, java.util. They are what? Nothing but packages which are going to provide some built-in classes, interfaces, and exception. You can use that for developing your program. Similarly, in Java, if you want to do communication or networking, you have to use a package java.net. So I'm going to show what package is java.net and what are the classes available in this package. And then we are going to see what is socket, what are the types of socket, and how to use socket for communication. And then I'm going to show you today application. I think we can create at least one application today. Client is sending something to server, or server is sending to something to a client. So today, I guess it is possible to create one application if I able to finish my theory part. So now let's begin. So this is what today's agenda of this learning. And student, just believe on me, after this session you are going to get a new concept and a very new thing, and you will really thankful like for this session that you have learned something new in Java. So the first thing is what? The computer network. So whenever any communication is to be done on a computer, we need what? Network. Okay, like you are now connected to my channel, or you are not seeing my, you are currently seeing my video because you have a connection. You may have Wi-Fi connection, or you might be using your mobile data. So to establish connection, we need a network, okay, or we need some form of communication. So here you can see I have shown two computers, they are connected to each other. Now, you all might be familiar with the protocol known as TCP and UDP. Okay, so TCP and UDP, they are standard protocols. What is protocol? They are nothing but set of rules which you have to follow if you want to establish communication, or if you want to do connection between a devices or between a computer. It can be any devices, they have to follow the protocols. So protocols are nothing but set of rules. So here we are going to use TCP as well as UDP. So I guess in today's session, I will be able to cover only TCP because the topic is quite vast. I need two more sessions. Okay. So TCP is what? Nothing but a network protocol which governs, or which helps you to connect to other devices or other application. So you can see in this diagram what I'm having. I'm having application. So this is what host, and this is another host. Host means system, machine, mobile devices. It can be anything, a devices which wants to communicate with each other. सो मैंने उनको क्या लिखा है? होस्ट. ये सेंडर हो सकता है, ये रिसीवर हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, ये रिसीवर है, ये सेंडर है, कुछ भी हो सकता है. सो इसलिए मैंने जनरल टर्म यूज किया होस्ट. सो नाउ व्हाट आई एम हैविंग अ सॉकेट. दिस सॉकेट यूजेस व्हाट? द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स टीसीपी आईपी, एंड देयर इज अ चैनल. एंड चैनल में मैंने एग्जांपल क्या दिया है? ईथरनेट दिया है. तो अगर आपने देखा होगा आपके लैब में एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्टेड है, तो वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं? कैन यू ऑल टेल मी हाउ दे आर कनेक्टेड? यस, how one PC is connected to other PC when you communicate, or whenever we have something like multiple computers, what concept we use? We use what? LAN. ओके, लोकल एरिया नेटवर्क. अगर एक बिल्डिंग में करना है, अगर आपको वैन करना है तो भी आप कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क. तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. तो आपके पीसी में यस लैन, राइट विवेक? सो लैन यूज करते हैं. तो आपके पीसी में क्या है? कनेक्शन का मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम लोग यूज करते हैं. ओके, लैन नहीं रहेगा तो दो डिवाइसेस कनेक्ट नहीं हो सकते. जैसे आपके मोबाइल पे वाईफाई, अगर आपके घर पे वाईफाई कनेक्शन है, बट इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड वाईफाई ऑन योर मोबाइल, देन यू इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट टू योर वाईफाई एट योर होम. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज चैनल. इट कैन बी एनी चैनल, वायर्ड चैनल हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है, राइट? ओके, देन यहाँ पे राउटर है. राउटर के थ्रू डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं. तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं और क्या कर रहे हैं? डेटा शेयर कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं.
Okay, I hope this diagram is clear. You are already aware of communication network or network communication topic. So I'm not taking this in detail. Just I want to tell you all that for communication, you need what network or a channel. Is this okay, student? Okay. So student, please share the link and ask other student to join this session. So now TCP, let me elaborate more on TCP because दो type के communication है. One is TCP, another is UDP. But most preferable is what TCP, because TCP are known as a reliable protocol. Can you all write full form of TCP? Yes, please write full form of TCP. So TCP does communication in byte, okay, and it is what point to point channel. So therefore it is called as reliable communication. What is point to point channel? There will be a sender and there will be a receiver. The sender is connected to receiver and they can send the data. That is called as point to point channel. So at a time, one sender is connected to one receiver. So therefore it is called as what? Reliable protocol or point to point channel. Yes, right. It is transmission control protocol. So for integrity, checksum is used to detect and reject corrupt packets. Now, what is this integrity? Transfer protocol. No, Salma, it is not transfer protocol. Even Gaurav, you are also not right. It is transmission control protocol. Yes, not transition. So integrity, what is integrity? Whenever you are sending data, the data should not be changed. For example, if you have sent a message, welcome, meet me at, hello, welcome, and meet me at 5 p.m. So you have sent this message, but when receiver receives message, the message should be received in the same format, or the message should not be altered. Like if you have sent hello, welcome, meet me at 5 p.m. So receiver should get same message. So TCP has built-in mechanism for doing this. So whenever any error occurs, there is a mechanism of checksum for duplicating or for detecting any errors. Also we have validity which checks for timeouts. मतलब आपने बहुत देर से पैकेट सेंड किया है या पैकेट लॉस्ट हो गया है, तो वो भी क्या करेगा? चेक करेगा. ओके, सो मैसेज आर guaranteed to be delivered. Okay, this is going to be a very strong word, guaranteed. अगर आप टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करते हो तो गारंटी होता है कि आपका मैसेज रिसीवर को सेंड होगा ही होगा. एंड दिस इज व्हाट आल्सो नोन एज लॉसलेस एंड रिलायबल प्रोटोकॉल. आगे जाके वी आर गोइंग टू लर्न यूडीपी प्रोटोकॉल, जो कि इसका काउंटर पार्ट है. वो रिलायबल नहीं होता है, वहां पे गारंटी नहीं होती है कि मैसेज सेंड रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है. एंड द वे यू आर सेंडिंग मैसेजेस, सेम वे द मैसेज विल बी रिसीव्ड टू द रिसीवर. मतलब ऑर्डर उसी ऑर्डर में जाएगा जिस ऑर्डर में आपने मैसेज सेंड किया है. सो स्टूडेंट, मेरा आज का टॉपिक टीसीपी पढ़ाना नहीं है, बट सिंस आई एम गोइंग टू यूज टीसीपी फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, तो आपको पता रहना चाहिए मैं टीसीपी ही क्यों यूज कर रही हूँ. बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव व्हाट रिलायबल कम्युनिकेशन, देयरफॉर आई एम यूजिंग व्हाट टीसीपी. एंड देन many frequently used services run over TCP. So आप लोग को पता ही है HTTP, HTTPS, ये सब क्या यूज करते हैं? FTP, SMTP, ये सब क्या यूज करते हैं? TCP, बिकॉज उनको लॉसलेस और रिलायबल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है. इज दिस ओके स्टूडेंट? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टाइप yes. Okay. Okay, now the next point is what? Socket. Now what is socket? Like you want to charge your mobile, so आपको चार्ज करने के लिए आपको उसको पावर सप्लाई तो करना पड़ेगा ना. So for supplying power, what you do? You plug your cord charger onto your what? Power supply. और फिर आपके मोबाइल को पावर मिलने लगता है, तो आपका मोबाइल चार्ज होने लगता है. So
In networking, what is socket? Now other example I'll give before starting the socket. Suppose आज मुझे आपके किसी के घर पे आना है और मुझे आपके पेरेंट्स को बताना है कि हाउ यू ऑल आर इन योर सब्जेक्ट और हाउ यू ऑल बिहेव इन योर क्लास. तो सपोज अगर मैं बोलती हूँ आज मुझे सलमा के घर पे आना है और सलमा के पेरेंट्स को आई एम गोइंग टू टेल मैम योर चाइल्ड इज एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग. ओके, या तो अगर मुझे किसी और के घर पे आना है, सपोज मैं अमनदीप के घर पे जा रही हूँ, तो अमनदीप के मॉम को मैं बोलूंगी आजकल अमनदीप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है. ओके, मुझे ऐसे कुछ करना है. तो मुझे आपके घर पे आना है तो सबसे पहले व्हाट आई नीड, कैन यू ऑल टेल मी, मुझे आपके घर पे आना है तो मुझे क्या चाहिए? यस, व्हाट आई नीड. मुझे तो आप लोग का एड्रेस नहीं पता है, आपसे कुछ कम्युनिकेशन, मैंने कभी आपके घर पे आई नहीं हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे आपका क्या चाहिए? डेफिनेटली आई नीड योर एड्रेस. ठीक है, आपने मुझे एड्रेस दे दिया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं डेफिनेटली आपके घर पे आ सकती हूँ. बट मैं आपके बिल्डिंग में आ गई, आप क्या किए? आपने बिल्डिंग नंबर दे दिया, बट आप क्या किए? भूल गए क्या देना? ओके, व्हीकल चाहिए. ठीक है, व्हीकल सेकेंडरी पार्ट में आता है, बट सबसे पहले तो मुझे एड्रेस चाहिए ना. ये सबसे पहले एड्रेस चाहिए. तो अब मुझे एड्रेस आपने दे दिया, बट आप नहीं चाहते हो कि मैं आपके घर पे आऊं, सो व्हाट यू डिड, यू ऑल कुछ तो मिस कर दिया आपने, अपना रूम नंबर मिस कर दिया और अपना विंग मिस कर दिया, जैसे मैम आके ढूंढे ढूंढे. ओके, सो अब इस केस में क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मैं पूरा इधर उधर रोम करूंगी, अरे ये बंदा या ये बंदी कहाँ रहता है. तो ये प्रॉपर एड्रेस या कम्युनिकेशन नहीं हुआ. तो कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे किसके घर पे जाना है और कौन से रूम में जाना है. एम आई राइट स्टूडेंट? यस, वेरी गुड. वी नीड फ्लैट नंबर. फ्लैट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट, मैंने सिर्फ दो स्टूडेंट का नाम लिया, सो आई होप यू ऑल डोंट माइंड. मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडमली दो लोगों का नाम ले लिया. तो ऐसे ही सॉकेट है. सो व्हाट इज सॉकेट? किसको किसके साथ कम्युनिकेट करना है, दैट इज गिवन बाय सॉकेट. ठीक है, इफ देर इज नोट सॉकेट, लाइक अगर आपके मोबाइल को चार्ज करना है, सो इफ देर इज नो सॉकेट फॉर पुटिंग योर चार्जर प्लग ऑन टू दैट, तो आपके पास चार्जर रह के भी आप उसको चार्ज नहीं कर पाओगे. वैसे ही सॉकेट होता है. सो आई हैव गिवन क्लियरली इन दिस डायग्राम, जस्ट पे अटेंशन ऑन माय स्क्रीन. तो यहाँ पे देखो क्लाइंट है, क्लाइंट को क्या करना है? सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है. नाउ स्टूडेंट, can you all tell me what is client and server? आपने ये वर्ड, you have heard this word so many times. So can you tell me what is client and server? Yes. So okay, let me give you some hint. What is client? Client कौन होता है? जो रिक्वेस्ट करता है कि जो रेस्पॉन्स देता है. Yes. Who is client? Those who done request or those who give response? Okay, so those who send request, they are called as what? Client. And those who process the request, they are called as what? Server. ठीक है, तो अब मुझे बताओ, कनेक्ट कौन करेगा किसके साथ? क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा कि सर्वर क्लाइंट के साथ कनेक्ट करेगा? Yes. Okay, so client request and server response to the request, right? तो अगर मुझे आपके घर पे आना है तो मैं इनिशिएटिव करूंगी ना. मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके घर पे आने के लिए, आपने मुझे एड्रेस दिया तो मैं आपके घर पे आऊंगी, तो आई एम अ क्लाइंट. यस. तो क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. लाइक यू डू व्हाट, गूगल में आप सर्च करते हो, तो आप गूगल में कुछ डालते हो, तो आपका ब्राउजर क्या हो गया? क्लाइंट हो गया, क्योंकि उसको कुछ चाहिए डेटा. तो गूगल सर्वर आपको कुछ रेस्पॉन्सेज देगा. यस, क्लाइंट ऑलवेज कनेक्ट्स टू सर्वर. डू रिमेंबर दिस लाइन, क्लाइंट ऑलवेज कनेक्ट्स टू सर्वर.
तो यहाँ पे यू कैन सी क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट कनेक्ट कर रहा है किसको, सर्वर को। अभी ये कोई भी सर्वर हो सकता है, इट कैन बी अ डेटाबेस सर्वर, इट कैन बी एप्लीकेशन सर्वर, इट कैन बी अ वेब सर्वर, कुछ भी हो सकता है, जो क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। बस आप इतना समझो कि ये क्या करता है, आपको रेस्पॉन्स देता है, और ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। सो client wants to communicate to server, so client need what, sockets। ठीक है, तो अभी अगर आप अपने पीसी में देखोगे तो आपके पीसी में तो लैन कनेक्शन एक ही रहता है, ईथरनेट कनेक्शन एक ही रहता है। तो सिर्फ सॉकेट नहीं, उसके साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पोर्ट्स। ओके, सो वन सर्वर कैन बी कनेक्टेड विथ मल्टीपल क्लाइंट्स बाय यूजिंग दिस पोर्ट्स। If you all remember, or I don't know whether you are aware of this or not, if you install any application, that application runs on a particular port, अगर वो नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है या कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, तो हर एक एप्लीकेशन अलग अलग पोर्ट्स पे इंस्टॉल होते हैं और रन होते हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू रन टू एप्लीकेशन ऑन अ सेम पोर्ट, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट व्हाट प्रॉब्लम। एक ही रूम में दो अलग अलग फैमिली रह सकती है क्या? सपोज एक छेड़ा फैमिली है, एक पेड़ा फैमिली है, कैन दे लिव टुगेदर? नो, दे आर टू डिफरेंट फैमिली, तो एक ही पोर्ट पे दोनों नहीं रह सकते हैं। ओके, सो इसके लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पोर्ट्स पे रन करना पड़ेगा। सो सॉकेट, यू कैन सी व्हाट, सॉकेट आपका सर्वर होता है, और उस सर्वर के ऊपर अलग अलग पोर्ट्स होते हैं जिसपे अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल हैं। ओके, सो नाउ पोर्ट नंबर 20, यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर 20 दिखाया, एफटीपी है जो डेटा यूज कर रहा है। पोर्ट नंबर 21 एफटीपी कंट्रोल, एंड डू रिमेंबर एचटीटीपी का पोर्ट क्या है, ये स्टैंडर्ड पोर्ट है स्टूडेंट, यू कांट चेंज दिस पोर्ट्स, दीज आर कॉल्ड एज रिजर्व पोर्ट्स। ओके, तो ये सारे रिजर्व पोर्ट्स हैं और आप इसको अपने प्रोग्राम में भी नहीं यूज कर सकते, यू हैव टू यूज unreserved ports, because if you are trying to use this port is already been used by http, so how you can use this? अगर आपके बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 203 है तो आप अपने को 203 आपके फ्लैट को नहीं मिलेगा, 201 24 कुछ और मिलेगा। सो सेम इज लाइक पोर्ट। ओके, सो बिल्डिंग का एड्रेस सेम होता है बट रूम नंबर्स अलग होते हैं, तो यू कैन कंसीडर रूम नंबर एज योर पोर्ट्स and building as your building address as your sockets। Okay, so now here you can see in this diagram I have tried to explain it in a simplified manner। तो यहाँ पे एक सर्वर है और एक क्लाइंट है, तो नाउ जस्ट इमेजिन दे आर डिफरेंट मशीन्स। ठीक है, सो इफ दे आर डिफरेंट मशीन्स, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हैव व्हाट, डिफरेंट आईपी एड्रेसेस, है ना? हर एक मशीन का अलग अलग आईपी एड्रेसेस होता है, so they are having different ip addresses, so you can see I have specified different ip addresses। now here is my client and here is my server, so this server is having so many ports and even client is also having so many ports। now server and client have agreed to work on this port, मतलब ये एक पोर्ट रहेगा, ये दोनों इस पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे। तो जब ये दोनों इस पोर्ट पे कनेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं अगर फोन नंबर, प्रॉपर फोन नंबर डायल करती हूँ, तब मैं जिससे मुझे बात करना है, आई कैन कम्युनिकेट टू देम। सिमिलरली इफ यू want, if client wants to communicate with a server, client need two things student, one is what, the port number, and another is what, to whom you want to communicate, so that is what, nothing but ip address। there are so many servers available, so which server you would like to communicate, so that you have to specify, and that is going to be either a dns name or it could be ip address। और दूसरी चीज क्या चाहिए, पोर्ट नंबर। तो ये दो बेसिक चीज चाहिए किसी भी क्लाइंट को किसी भी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। if the socket and port concept is clear, please type clear in chat box। yes, okay, so
UDP as well as TCP, they both need what? Socket for endpoint communication. So मैंने यहाँ पे processes दिया है. In general, it can be anything. Okay. So a socket is associated with internet address and port number. तो सॉकेट सिर्फ सॉकेट होना ही जरूरी नहीं है, सॉकेट के साथ पोर्ट भी होना जरूरी है, एड्रेस के साथ रूम नंबर होना भी जरूरी है. सो ईच कंप्यूटर हैज 2:16 पॉसिबल पोर्ट्स. अगर मैं अभी मेरा लैपटॉप ले लेती हूं तो मेरे लैपटॉप को भी कितने पॉसिबल पोर्ट्स हैं? 2:16. ओके, तो आप उसमें से कोई भी पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो. सो नाउ हियर यू कैन सी, मैंने बताया है कि सॉकेट क्या कर सकते हैं, इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं. तो इनपुट इज व्हाट? रीडिंग, एंड आउटपुट इज व्हाट? राइटिंग. लाइक देयर इज अ क्लाइंट एंड सर्वर. क्लाइंट क्या कर रहा है? सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, this is what my basic salary and these are what my different investment, calculate and return me what? My tax which I have to pay. तो ये टास्क कौन करेगा? सर्वर. तो यहाँ पे इनपुट क्या हो गया? माई बेसिक सैलरी एंड माई इन्वेस्टमेंट्स आर इनपुट, एंड वॉट एवर एक्टिविटी सर्वर हैज डन एंड द रिजल्ट विच सर्वर इज गोइंग टू रिटर्न यू, दैट इज गोइंग टू बी योर आउटपुट. तो जरूरी नहीं है कि रीडिंग सिर्फ सर्वर ही करेगा या क्लाइंट ही करेगा, दोनों वे से हो सकता है. ओके, गुड आफ्टरनून रिया. सो बोथ वे communication is possible. So server can send data to a client, or client can send data to a server, or server can receive data from client and client can receive data from server. So this is called as two-way communications. Okay, so now here is what concept of port I have given. So every machine have what? A ports. मैंने बताया 16 बिट का पोर्ट नंबर होता है, and there are possibility of 2:16 ports. So there are some reserve ports, they are also known as well-known ports. And what is the value? 0 to 1023. तो 0 to 1023 के बीच में आप कोई भी पोर्ट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें से हर एक पोर्ट फिक्स्ड है किसी ना किसी सर्विस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, FTP का पोर्ट नंबर 21 है, टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 है, SMTP विच इज यूज्ड फॉर मेल ट्रांसफर, पोर्ट नंबर इज व्हाट? 25. HTTP जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, उसका पोर्ट नंबर 80 है. POP का भी पोर्ट नंबर है. सो एवरी सर्विसेज हैव सम पोर्ट नंबर. So till 1023 you can't use, but you can use any port number greater than 1024. Am I clear with this term? पोर्ट क्या होगा? आप सर्वर बना रहे हो तो सर्वर को कहीं ना कहीं तो रन करना पड़ेगा, तो वो रन करने के लिए आपको पोर्ट नंबर चाहिए रहेगा. तो आप 1024 के आगे कोई भी पोर्ट यूज कर सकते हो. सो स्टूडेंट, इफ दिस इज क्लियर टू यू ऑल, प्लीज टाइप yes clear so that I can go to the next part. Okay, so TCP and UDP protocol uses ports to map incoming data to a particular process running on a computer. तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो मैसेज आ रहा है ये पर्टिकुलर सर्वर को ही जाना चाहिए, और द मैसेज विच server is sending should be sent to that particular client? That is because of port number. Yes. Okay, so now next we have was java.net API. So as I said, अगर आपको जावा में नेटवर्किंग करना है या कम्युनिकेशन करना है, you have to use java.net API. So this API is having interfaces, exceptions and classes, as all packages have. Every packages have what? Exception, interfaces and what? Classes. ये तीन चीजें हर एक पैकेज में होती है. So here we have so many classes, but the one which I have highlighted, we are going to use that classes for developing program. So ServerSocket and socket we are going to use for writing TCP communication, and then if you want to do UDP communication, then what you have to do? You have to use datagram socket and datagram packet. अगर आप स्टैंडर्ड URL का फॉर्मेट दे रहे हैं, आपको किसी URL से फाइल रीड करना है,
So we are going to use this URL. Okay, then inet address. Every machine have some address, that is DNS name or IP address, so that can be passed by using what? Inet address class. So these are the how many are there? 2, 4, 7, 8 classes which are very very important in java.net for doing any kind of application, one way or two way kind of application. Then these are some interfaces, हम इसको use नहीं करेंगे. And exceptions we are going to use. So you have passed some port number which does not exist, or there is no server running on that port number, or you have passed some IP address which is not existing, so then you can get this kind of exceptions. Okay, so these are nothing but different classes, interfaces and exceptions in java.net API. Okay, so now student, let's move to the main part, that is what? Server socket and socket. मैंने अभी आपको बताया, मैं पहले आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं TCP यूज करके कैसे कम्युनिकेशन करते हैं. आई एम गोइंग टू टीच यू दैट. Okay, so to do communication using TCP, what you have to do? You have to use server socket and socket. So now let's see detail of server socket and socket. I hope I'm clear with java.net API, the purpose of java.net API. Okay, so Java TCP socket, we have a class known as server socket. So can you guess student, ये class किसके लिए use होगा? I'll give you hint. There is a word inside this word which is to be used. Okay, server socket. So tell me whether it is going to be used for server, or this class will be used for creating application for client. Just think an address. Yes, so you can see the name is server socket. Yes, therefore it is used for what? Server. Yes, very right. Server के लिए use होगा क्योंकि नाम में ही server socket दिया है. So whenever you want to create server program, you have to use this class. ये star class है. सर्वर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला क्लास यूज करना पड़ेगा. Now next is what is job of this server socket? Yes, Hartej Salva, you are right. ये server socket क्या करेगा? Waits for request to come in over the network. So if there is a server हमेशा on रहेगा and it will wait whether the request is coming or not. If the request is coming, it will establish communication with that particular client, and then it will do some operation depending on the request, and then returns what? Result. तो सर्वर का जॉब क्या है? वेट करना. कब तक वेट करेगा? जब तक कोई क्लाइंट कम्युनिकेट नहीं करेंगे. गूगल सर्वर और कोई भी सर्वर आप ले लो, वो 24/7/365 डेज ऑन है. बट जब कोई रिक्वेस्ट करेगा तब उनको रेस्पॉन्सेस और सर्चेस मिलेंगे ना, अदरवाइज वैसे ही थोड़ी ना उठ के सबको रेस्पॉन्सेस रिटर्न करने लगेगा. ओके, so therefore server is always going to be always going to wait for request, and if any request comes, depending on the request, it is going to do the operation, and then it is going to return the response. Now here is the constructor, which is the very very important constructor for creating this server program in Java. That is what? Server socket int port. तो आप क्या करोगे? सर्वर सॉकेट का कंस्ट्रक्टर बनाओगे और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? पोर्ट नंबर पास करना पड़ेगा. सो व्हाट इज दिस पोर्ट नंबर? मतलब ये सर्वर सबको पब्लिकली बता रहा है कि भाई मैं यहाँ पे रन हो रहा हूँ. इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी, जस्ट पास दिस पोर्ट नंबर एंड माय आईपी एड्रेस. ओके, सर्वर डोंट लाइक मैं आपके घर पे आई, आपके घर पे ही आके मैं आपको ये नहीं पूछ सकती दैट इज दिस योर हाउस. ओके, सो दैट इज समथिंग रॉन्ग. तो सर्वर इज नॉट गोइंग टू टेल कि अरे मेरा ये आईपी एड्रेस है. उसका मशीन तो सेम है, बट उसको क्या करना पड़ेगा? पोर्ट बताना पड़ेगा, बिकॉज देर आर सो मेनी सर्विसेज विच आर रनिंग ऑन सर्वर.
So what server can specify ki this is what port number which you are interested, then you can connect with me. Okay, create a link using SQL. I didn't get your question. Create a link means what? You want to connect to your SQL database? Okay, something, some different question. We are discussing what networking, and this question is related to database. I'll surely help you. So, if you want to use SQL in NetBeans, you have to either connect with SQL Server, or you can use MySQL connector.jar file. Okay. So now come back to topic. हम लोग networking कर रहे हैं, तो थोड़ा networking पढ़ लो. उसके बाद at the end I can take your query. No problem. So, student, now I hope this is clear to you. Server ये नहीं बताएगा मेरा IP address क्या है, जिसको connect करना है. Like if you want to search, you have to decide whether you want to do Google search, or you want to do Yahoo search, or you want to do Bing search. तो आप google.com डालते हो, तो आपने google.com डाला because you are a client. And then what you want to search, आप वो specify करते हो. तो वैसे ही सर्वर किसी को नहीं बताने वाला है कि मेरी ये IP एड्रेस है, but what server is going to tell that this is what my port number where the service which you are looking for is running. Yes student, is this okay? Is this clear to you? This constructor, यही constructor है जो आपका पूरा गेम प्ले करने वाला है. Okay, now then we have a method. Sorry, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये कैपिटल ए नहीं है, it is a method, ये स्मॉल ए है. So there is a method accept. So this method is known as blocking method. Why it is blocking method? ये क्या करता है, जब तक कोई क्लाइंट कनेक्ट नहीं करता है तब तक सर्वर को क्या करेगा, एक्टिवेट नहीं करेगा, मतलब वेट मोड में डाल देता है. Obviously, if nobody is requesting any services, then why it should run? So therefore it is in block mode, and if somebody requests, then what happens, आपको वो क्या करेगा, अपना एक्टिविटी और अपना टास्क परफॉर्म करेगा. And now student, can you see this accept method returns you what? Socket. Now what is socket? Socket is what? Okay, so constructor is not clear. So let me explain again. A server socket constructor, you have to use in server program. So just आपको यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, कोई भी पोर्ट नंबर ग्रेटर दैन 1023. तो आपका मशीन है, आपका एक सर्वर है, आपने बता दिया सपोज मेरा एक सर्विस रन हो रहा है, पोर्ट नंबर किस पे, 444 पे रन हो रहा है. सो दिस इज व्हाट यू हैव सेड. पब्लिकली आपने बता दिया कि मैं इस पोर्ट पे रन हो रहा हूं. तो अब अगर कोई क्लाइंट है, इफ देयर आर क्लाइंट्स हु वांट टू कम्युनिकेट विद दिस सर्वर, व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू यूज 4444 एज अ पोर्ट नंबर. क्यों? क्योंकि उनको ये सर्वर से रिक्वेस्ट करना है ना, तो उनको ये पोर्ट नंबर यूज करना पड़ेगा. अगर ये कोई और इसके पास बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, बट क्लाइंट इज इंटरेस्टेड इन दिस सर्विस, तो उसको वही पोर्ट नंबर पास करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको एक पोर्ट नंबर पास करना है, एंड पोर्ट नंबर दे आर नथिंग बट इंटीजर. जस्ट नाउ आई सेड पोर्ट नंबर दे आर व्हाट, integers, and they have, you can pass any port number greater than what, 1024. Yes Salma, your doubt is clear? Okay, so now we have another method. We have one method, not we have other methods also, but I'm showing you what does we have a method. ये small a है, sorry for that. Small a accept. What it does, it waits until the client request. Okay, so जब client request करेगा तो ये अपना response और अपनी activity operation start कर देगा. So listens for connections to be made to this socket and accepts it. So if anyone gives what, request, then it accepts the request. If anyone gives request, that is okay, but if gives request on the same port number, then it accepts the request, and then what it does, it starts the
activity. Okay, and here you can see I have given one word, blocks until a connection is made. So I'm going to create one program and I'm going to show you कि कैसे होता है ये. तो जब तक कोई connection establish नहीं करेगा, till that no one, till that server is not going to perform anything. Okay, so this is what your accept method. So do remember this two one constructor and one method of what, server socket, which is the important one. Now next we have as socket. अब सर्वर सॉकेट किसके लिए यूज होता था? सर्वर सॉकेट वाज यूज्ड फॉर व्हाट? क्लाइंट. सो ऑब्वियसली सॉकेट किसके लिए यूज होगा? यस, सॉरी, server socket was used for server, socket is used for client. Okay, so Vivek is asking if two people want to use the services at the same port simultaneously, it will work. It will work in case of UDP, but it will not work in case of TCP, because TCP is what, one-to-one communication. So if task of one client finishes, then it can take to other client, because एक बार उनका communication हो गया, उसको response दे दिया, तो उनका connection close हो जाता है, then it can go to other client and it can give response to other client also. This way it works, TCP, because of its reliability protocol. Okay, so it is going to give response to all client, but one by one. Therefore, it is known as one-to-one communication. I hope I am clear, Vivek. Okay, now the next class we have as socket. Socket, आप अपने mind में बस एक चीज याद रख लो स्टूडेंट, सर्वर सॉकेट सर्वर के लिए यूज होता है, और जो सिर्फ सॉकेट है वो किसके लिए यूज होता है? दैट इज यूज्ड फॉर क्लाइंट. तो अगर आपको ये याद नहीं रहता तो सर्वर सॉकेट याद रखो, सर्वर सॉकेट सर्वर, तो ऑब्वियसली सेकेंड वन इज गोइंग टू बी फॉर क्लाइंट. सो whenever you want to implement client, मतलब आपको क्लाइंट बनाना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ये क्लास यूज करना पड़ेगा. Okay, so now what are the constructor for socket class? Now see the constructor. There we had server socket which was taking only one parameter, that is a port number. And now here I have a socket constructor which is taking two parameter, that is host name and port number, to whom you want to connect and to which service you want to connect. That all thing you have to specify. Like just now I gave example, which search engine you want to use, whether you want to go for Bing, Yahoo और Google, वो आप पहले टाइप करते हो ब्राउजर में google.com, फिर उसके बाद आपको जो सर्च करना है आप करते हो. वैसे ही जब क्लाइंट रहेगा ना, क्लाइंट हैज टू स्पेसिफाई विच सर्वर he or she want to communicate, and then he or she has to specify the port number also, because if you see in this diagram I have shown you one thing, like सर्वर एक आईपी एड्रेस पे रन होता है, तो क्लाइंट हैज टू स्पेसिफाई दिस आईपी एड्रेस. इफ नॉट स्पेसिफाइंग आईपी एड्रेस, कैन स्पेसिफाई डीएनएस नेम ऑल्सो. आई होप सबको डीएनएस नेम पता है. लाइक nobody uses गूगल का आईपी एड्रेस, वी ऑलवेज टाइप google.com और google.co.in, है ना. तो डीएनएस के थ्रू ही हम करते हैं. तो अगर आपको आईपी एड्रेस पता है तो आईपी एड्रेस पास करो, नहीं तो यू कैन पास डीएनएस नेम ऑल्सो. So here you can see socket or client. Since it is a client, it has to connect to server. So it has to specify to which server it has to connect. तो ये जो IP एड्रेस है ना, वो आपको डबल कोट्स में यहाँ पे पास करना पड़ेगा. स्टूडेंट, if you are having some doubt or you are getting confused, don't worry, I am going to show you example जहाँ पे आपको clearly समझ जाएगा ये प्रोग्राम. Okay. So still I'm trying to explain in a best way so that there is no doubt. So here I have a host. Host क्या होगा? Server. So I need to specify IP address or what, this DNS name of my server. किसके साथ आपको कनेक्ट करना है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा. Now दूसरी चीज आपको क्या बतानी पड़ेगी? पोर्ट नंबर बतानी पड़ेगी. Yes. Did you all understood this part? Why socket is taking two parameter? Or will you all be able to remember this? Just ऐसे याद रखो, सर्वर है भाई तो सर्वर को सिर्फ बताना पड़ेगा, अरे मैं यहाँ पे रन हो रहा हूँ.
And if it is a client, it has to establish connectivity. So to whom it has to establish connectivity, that it has to specify, and which services client is interested, that has to be specified, and that is nothing but your port number. Student, if this constructor is clear, please type clear in chat box. Yes. Okay, so now, yes. Okay, so thank you, Salma. Others also please type whether it's clear or not. Okay, so student, we are going to do communication. So communication need input and output. Of course, कुछ तो send करना है, कुछ receive करना है. That are called as input and output. So Java TCP socket or Java networking uses IO, which you have done in your java.io package. आपने जो java.io package में किया है ना, input stream, output stream, ये जो टीसीपी है या नेटवर्किंग है ना, इसमें भी आप सेम यूज करने वाले हो. सो यू माइट बी नोइंग इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम किस लिए होता है? रीड करने के लिए. एंड आउटपुट स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर सेंडिंग समथिंग. सो जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग यूजेस java.io फॉर डूइंग व्हाट? कम्युनिकेशन. उसका खुद का भी पैकेज है, वी कॉल्ड एज NIO, networking IO, but that is not there in your syllabus, and we generally do networking programming using IO का classes, input stream, output stream, input reader, file writer, character writer, वही यूज करके करते हैं. So now let's understand ये क्या है. अभी now see the scenario. There is a client is sending something to a server. ठीक है. So client is sending something to a server. So what server has to do? Server has to read the data. And what client is doing? Client is sending. तो you can understand यहाँ पे input output हो रहा है. Input किसके लिए हो रहा है? सर्वर के लिए इनपुट है. और आउटपुट किसके लिए है? क्लाइंट के लिए आउटपुट है. So we have a class known as input stream and an output stream. So input stream generally refers to what? Reading or getting or retrieving. और output stream generally refers to what? Sending or writing. ठीक है. तो अगर आपको कहीं से कुछ रीड करना है, कहीं से मतलब अभी नाउ सी अंडरस्टैंड द सिनेरियो. देयर इज अ क्लाइंट एंड देयर इज अ सर्वर. सो क्लाइंट इज सेंडिंग समथिंग टू सर्वर. सो कैन यू ऑल टेल मी हु इज गोइंग टू रीड, क्लाइंट और सर्वर? हु इज गोइंग टू रीड? यस. ओके, सो सर्वर इज गोइंग टू रीड. तो सर्वर क्या यूज करेगा? सर्वर गेट इनपुट स्ट्रीम यूज करेगा. यस. ओके, नाउ लेट्स सी द रिवर्स. यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है. नाउ व्हाट सर्वर इज डूइंग? सर्वर इज सेंडिंग समथिंग टू क्लाइंट. नाउ हु विल रीड हियर? क्लाइंट विल रीड. यस, हियर क्लाइंट विल रीड. यहाँ पे गेट इनपुट स्ट्रीम कौन करेगा? क्लाइंट करेगा. नाउ क्लाइंट इज सेंडिंग समथिंग टू सर्वर. तो क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा? क्लाइंट को आउटपुट स्ट्रीम यूज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो कुछ तो सेंड कर रहा है. और यहाँ पे सर्वर को आउटपुट स्ट्रीम यूज करना पड़ेगा. बस दिस इज व्हाट हार्ट ऑफ योर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग और सॉकेट प्रोग्रामिंग. ओके, दोस हु आर reading, they have, just remember in this way, reading means what? Input stream. Writing means what? Output stream. बस इतना याद रख लोगे, आपकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी. ओके, देन वी हैव अनदर मेथड एज क्लोज. कनेक्शन हो गया, आपको रेस्पॉन्स मिल गए, तो आप सर्वर के साथ कनेक्शन आपको क्लोज करना पड़ेगा. अदरवाइज देर आर अदर क्लाइंट हु आर वेटिंग टू कनेक्ट टू सर्वर. So there is a method known as what? Close, which does what? Close connection between client and server. Am I clear, student, with this constructor and method?
If yes, please type yes. See, if you give responses, then only I can understand the concept is getting clear, and then I can take, I can explain other part or more in detail of the concept. Okay. ओके, सो हियर आर कंस्ट्रक्टर्स. ये सारे कंस्ट्रक्टर हम यूज नहीं करने वाले हैं, बट आई हैव स्पेसिफाइड सो दैट अगर आप कहीं पे इंटरव्यू या थेरी के लिए जा रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कंस्ट्रक्टर्स हैं. ओके, देन नाउ we have methods. Just now we have seen method accept, which is the heart or star method in your networking, and we have another method close. Okay, so close is also a star method. Then we have method get inet address. Student, I'm going to take inet address in detail in my next session, because again it is vast topic. So get inet address returns what? IP address of your machine, और name भी return करता है आपके machine का. And get local port returns port number of your machine. So this inet address I'm going to discuss in next session, so don't worry about that. Just remember the method. So that was the method and what constructor of server socket. Everyone now type what constructor of server socket and the important method which is used for establishing communication. Yes. Type the constructor for server socket or for server. Which constructor we use? Okay, so server socket, in parenthesis you need to pass port number. Okay, right. Then now let's see this socket constructor. Socket constructor हमने अभी देखा कि हम host name pass कर सकते हैं. This is the simplest one. I use this one. आप ये भी use कर सकते हो. inet address, IP address pass करो. So 192 वो आपको proper IP address pass करना पड़ेगा. Yes, right. ठीक है. देन नेक्स्ट मेथड्स भी हम लोग ने देख लिए. Now what I'm going to do, student, I'm going to show you example. Just now I said socket programming uses java.io for communication purpose for input and output. So let's see the steps for creating server program. So how to create server? Now we have seen एक server होता है, एक client होता है, दोनों के बीच में connectivity होती है, and then they start sharing their messages or they start sending and receiving the messages. So how it is done actually? So for that you have to follow certain steps. So what are the steps? सर्वर को क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. सो कनेक्शन एस्टैब्लिश के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वर को अपना पोर्ट नंबर रन करना पड़ेगा. स्टेप नंबर 2, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और लिसन करना पड़ेगा रिक्वेस्ट को. एंड स्टेप नंबर 3, गिव रेस्पॉन्स. दिस रेस्पॉन्स विल वैरी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सर्वर. So these are the steps which server has to do. Okay, now the key class here is what? Server socket. ये तो हमने देखा कि सर्वर के लिए सर्वर सॉकेट ही चाहिए. Then the step number 1 which I said that establish the connection. So for establishing connection आपको सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा पोर्ट नंबर पास करके. फिर उसके बाद लिसन करना पड़ेगा. फिर आउटपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम बनाना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दिस लाइन, आई एम गोइंग टू शो दिस इन एग्जाम्पल. सो ये कुछ तो लाइन है जो नेटवर्किंग में यूज करते हैं रीडिंग राइटिंग के लिए. फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सर्वर ने कुछ सेंड किया तो वो रीड करो, और सर्वर को कुछ क्लाइंट को सेंड करना है तो वो सेंड करेगा, और बाद में फाइनली क्लोज करेगा. ठीक है. Now another is what? Client. What step client has to do? Client क्या करेगा? Connection request करेगा. ठीक है. कनेक्शन अपना क्रिएट करेगा कि मुझे इस आईपी एड्रेस और इस पोर्ट नंबर पे कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है, और फिर वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा. क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सेंड करेगा, फिर उस बाद में क्लोज करेगा. हियर की क्लास इज व्हाट? योर सॉकेट.
Okay student, so now here are the step. Socket का constructor आपको use करना है. You have to create object of input stream and output stream. Then you can send the data and you can receive the data and you can send the data using this line. And finally, client has to close the connection. So this is what general step which all program has to follow whenever you want to do one-way communication, two-way communication, or if you want to create chat kind of application. That time you have to follow these steps. Okay. So can I go to example now, student, if the concept is clear to you all? Yes. Can I start example? Okay, so today I'm going to show you example using example using NetBeans. क्योंकि मैंने आपको already Notepad, Notepad plus plus, IntelliJ सब में बता दिया है. Now I'm going to show you using what? NetBeans. So student, quickly share this link to your friends because अब तक तो theory था, अब programming हम लोग करेंगे, which is going to be uh, very important and very interesting in Java networking. So ask them to join so that maximum student can take benefit of this. So let me start NetBeans. So I have started my NetBeans. Now what I'm going to do, I'm going to create program. So can you all tell me how many programs here I need? Yes, कोई बता सकता है कितने प्रोग्राम चाहिए? Do I need one program or two program? Just think student and answer this question. How many program we need? 1, 2, 3, 4 or how many? Okay, Salma is saying 2. What about others? What about others? How many program we need? Okay, so now let's create. Yes, we need two program. One is going to be a client, another is going to be server. So student, now for 15 to 20 minutes, focus on the screen. एक line, एक important role play करने वाला है. So here I'm going to create project in NetBeans. आप NetBeans का कोई भी version install कर लो, आप ये program कर सकते हो. So now what I'm going to do, I'm going to make a Java, simple Java application. GUI वाला नहीं बना रही हूँ, simple Java application बना रही हूँ. So Java application. Now you can give the name. So here I'm giving name as server, and then you can browse the folder. आपको जो भी folder चाहिए, आप वो folder browse कर लो. So I have already browsed Java tutorial मैंने ले लिया है. And then what I'm doing, I'm just clicking on finish project. Yes, one for server and two for client. Okay, so server बना दिया मैंने. So student, you can see in NetBeans. Okay, let me increase the font and let's delete this comment because these are not required. So that whatever we need, only that much stuff should be there. Okay, तो you can see ये NetBeans में ऐसे होता है. आपका source package रहता है जिसमें आपका program server.java बन गया main method के through. Now I'm going to create one more program. So again, new project, Java application. Click on next, and here you can give client. Student, why I'm not taking command prompt? Because if I take command prompt, then I have to manually go and change path and everything. I need to recompile. सब manually करना पड़ेगा. इसलिए मैंने NetBeans पे कर लिया है. So I have given name as client. Okay, so again client project has been created automatically in NetBeans. आपके हर एक project के लिए जो आपका project name रहता है वही package भी बन जाता है. So just wait. Okay.
So I have deleted all this comment which are not required. Okay, so done. ओके, सो स्टेप नंबर 1 करते हैं। सब लोग क्या, सबको क्या करना है, अपना स्क्रीन पे फोकस करना है। सो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था स्टेप नंबर 1 की कनेक्शन क्रिएट करो, है ना। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट कनेक्शन। तो कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग कौन सा क्लास यूज करते हैं, सर्वर सॉकेट। ओके, so I'm going to write server socket ss equal to new server socket. Now student, what I should pass in this parenthesis, I should pass port number. तो मैं कोई भी पोर्ट नंबर पास कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4567 में पास कर दिया। नाउ इट इज शोइंग मी एरर बिकॉज पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है, तो मैं इसका पैकेज भी इंपोर्ट कर देती हूँ। सो सर्वर सॉकेट इज देयर इन java.net पैकेज, so I have just imported the package java.net. Now another thing, this server socket throws an exception. So what I have to do, I have to write this part in a try catch block, or you can throw the exceptions also. तो यहाँ पे देखो बोल रहा है throws IO exception और सराउंड विथ ट्राई कैच ब्लॉक। सो आई एम थ्रोइंग, तो यहाँ पे थ्रो कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, इट थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, सो इधर यू राइट इन ट्राई कैच ब्लॉक और यू थ्रो द एक्सेप्शन। नाउ डन विद दिस पार्ट, आपने बता दिया कि ये यहाँ पे रन हो रहा है। अब क्या करेगा, कोई क्लाइंट इससे कनेक्ट करेगा, तो क्लाइंट के लिए व्हाट वी यूज सॉकेट। So what is the method which accepts the communication? The method is what? Accept. So if any client sends a request to this port number, तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और क्या रिटर्न करता है, उस क्लाइंट को रिटर्न करता है। तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप में क्या है, सॉकेट है। स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव सीन द कंस्ट्रक्ट एक्सेप्ट मेथड का रिटर्न टाइप। Let me take you to back to accept method. Okay, so can you see my accept method returns what? Socket. So therefore at left side I am creating what? Object of socket. Is my font okay? Okay, so at my left side what I'm doing, I'm creating object of socket. So this socket will be what? Socket of whom? जिसने रिक्वेस्ट सेंड किया है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर देती हूँ, क्या? कनेक्शन एस्टैब्लिश। दिस इज व्हाट माय मैसेज व्हिच आई एम प्रिंटिंग, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया। ओके, नाउ स्टूडेंट सी द पॉइंट। अब सर्वर क्या करेगा ना, सर्वर क्या करेगा, कुछ तो मैसेज क्लाइंट को सेंड करेगा। तो सेंड करना है, तो मैंने क्या बताया, whenever you want to write or whenever you want to send, then you have to use what? Output stream. So now I'm going to create output stream. So in Java we have a class known as print stream, जो किस लिए यूज होता है, सर्वर और क्लाइंट को कुछ रेस्पॉन्स और मैसेज सेंड करने के लिए। So how I'm going to write this new print stream. Now where you want to send message, that you have to specify. So I want to send message to client. So what refers to client? S refers to client. And what is S? S is nothing but my what? Object of socket. So now I wrote what? Print stream PS equal to new print stream. ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, s dot get output stream. What is this line? S is what? Object of socket. And what is socket? Socket refers to what? Nothing but what? A client. So here I created object of client. I'm taking output stream of client. That means now I can print whatever I want onto the client. So here print stream is having two method, print and println, like your system.out is having method. So if you want to print anything on client, आप क्या कर सकते हो, आप ये मेथड यूज कर सकते हो। तो मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना है, ग्रीटिंग फ्रॉम CS कॉर्नर। ओके, ये आपने मैसेज
प्रिंट कर दिया. Okay, and then finally what I'm going to do, I'm going to close the connection. तो जिस क्लाइंट के साथ मैंने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था उसको मैं क्या करूंगी, मैं क्लोज करूंगी. Yes, student, see the line and let me know if any of the line is not clear. Again, I'm going to repeat the line. So what I did, I just created one project in Java और फिर मैंने सर्वर सॉकेट का क्लास बना दिया. क्यों मैं सर्वर सॉकेट बना रही हूँ? बिकॉज दिस क्लास इज गोइंग टू एक्ट एज अ सर्वर एंड देन आई एम राइटिंग दिस मेथड. ये मेथड नहीं लिखोगे तो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा. सो ये मेथड किसके लिए है? क्लाइंट के साथ कनेक्शन करने के लिए है. सो दिस मेथड रिटर्न्स व्हाट? कौन से क्लाइंट के साथ आपने कनेक्शन किया है उसका सॉकेट रिटर्न कर देगा. नाउ देन आई वांट टू प्रिंट समथिंग ऑनटू माय क्लाइंट. दिस एसओपी इज गोइंग टू प्रिंट ऑन कंसोल ऑफ सर्वर, बट सर्वर का कंसोल क्लाइंट को थोड़ी ना दिखेगा. तो मुझे क्या करना है? क्लाइंट को कुछ मैसेज प्रिंट करना है या मैसेज भेजना है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ? प्रिंट स्ट्रीम लिखने वाली हूँ. प्रिंट स्ट्रीम क्या करता है? सर्वर का प्रिंट स्ट्रीम लेगा. स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड? इट इज बफरिंग और व्हाट? So print stream is used whenever you want to write something to any of the party or you want to send to something to any of the party. Party means server or client. So अब यहाँ पे मैंने क्या किया? s dot get output stream लिया है. What is s? s क्या है? मेरा क्लाइंट है. तो क्लाइंट का आउटपुट स्ट्रीम मैंने ले लिया है एंड देन उसको कहाँ पे मैंने किया है? ps में. नाउ आई कैन प्रिंट एनीथिंग ऑन क्लाइंट. Yes, student, is this program clear to you all? Server program. If this program is clear, then I can start with what? Client program. Yes. Can I start client program? Yes, no, yes, no. Please type yes, no if it is clear. If clear, type yes. Otherwise, no. सबको समझ में आ गया? Okay, what about others? Is this program clear? ठीक है. Okay. If I run this program, will I get any output? चलो देखते हैं. क्लाइंट है ही नहीं तो आउटपुट क्या आएगा? तो मैं इसको रन कैसे करते हैं? राइट क्लिक, रन फाइल. सो नाउ हियर ओनली आई एम गोइंग टू गेट आउटपुट बिकॉज इट इज आईडी. तो देखो कनेक्शन एस्टैब्लिश मैसेज भी नहीं प्रिंट किया. क्यों? किसी ने कनेक्शन किया ही नहीं. सो इट विल नॉट प्रिंट एनी मैसेज. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस प्रोग्राम एंड देन आई एम गोइंग टू राइट प्रोग्राम फॉर क्लाइंट. तो ये मेरा क्लाइंट था. अब क्लाइंट का प्रोग्राम बनाते हैं. स्टूडेंट, कैन यू ऑल हेल्प मी? क्लाइंट का प्रोग्राम कैसे बनाए? कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? यस, वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सॉकेट. सॉकेट इक्वल टू न्यू सॉकेट एंड नाउ आई एम एट माय होम. मैं लैन में नहीं हूँ. मेरा स्टैंड अलोन मशीन है, लैपटॉप है. तो अगर आपका सिंगल लैपटॉप है, आप लैन में नहीं हो, तो आप यहाँ पे क्या पास कर सकते हो? लोकल होस्ट पास कर सकते हो. सो लोकल होस्ट रेफर्स टू करंट मशीन. यही मेरा सर्वर है, यही मेरा क्लाइंट है. Okay, and then here you need to pass port number. What port number I should pass? Yes, what port number I should pass? Yes, right. Socket port number क्या पास करना पड़ेगा? ये 111 पास कर दूं चलेगा? No, it will not. It will work, but problem देगा ये. 111 तो पहले आप ले ही नहीं सकते हो. उसके बाद 1567 no. It is not going to show you output because उस पोर्ट नंबर पे कोई सर्विसेज ही नहीं रन हो रही है. सर्वर कौन से पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है? सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4567. सो क्लाइंट हैज टू पास हियर 4567. ओके, नाउ इट इज आस्किंग मी टू इंपोर्ट पैकेज. मैंने इंपोर्ट कर दिया. यस, 4567. वेरी गुड विवेक. ओके, एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा? ये एक्सेप्शन, सॉकेट एक्सेप्शन थ्रो करता है.
तो आपको वो एक्सेप्शन सब थ्रो करवाना पड़ेगा, या तो ट्राई कैच ब्लॉक लिख दोगे तो थ्रोज नहीं करना पड़ेगा. सो सॉकेट कंस्ट्रक्टर थ्रोज 2 एक्सेप्शन, अननोन होस्ट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन. तो वो वाला मैंने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है. सो क्लाइंट रेडी हो गया है कनेक्ट करने के लिए. ओके, नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, माई कनेक्शन इज गोइंग टू एस्टैब्लिश. आई हैव नॉट डन एनीथिंग. अब देखो मैं क्या करती हूँ, पहले किसको रन करना पड़ेगा? स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन. whom should I run, server or client? Yes, should I run client first or should I run server first? Yes, चलो मैं क्लाइंट को रन करती हूँ. कनेक्शन रिफ्यूज का एरर आना चाहिए. यस, नो, क्लाइंट को पहले रन नहीं करेंगे. कनेक्शन रिफ्यूज, सर्वर तो चालू ही नहीं है तो क्लाइंट किसको कनेक्ट करेगा? यस, सो ऑलवेज फर्स्ट ऑन योर सर्वर. तो पहले सर्वर के प्रोग्राम को रन करेंगे. तो अब सर्वर रेडी हो गया है, सर्वर के प्रोग्राम को आपने रन कर दिया, दैट मीन सर्वर इज स्टार्टेड ऑन दिस पोर्ट नंबर. सो नाउ इफ आई रन माई क्लाइंट, व्हाट विल हैपन? कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा. कैन यू सी, सर्वर पे देखो मैसेज प्रिंट किया, कनेक्शन एस्टैब्लिश. मैंने क्लाइंट में और कुछ लाइन नहीं लिखी है, इसलिए वो स्टॉप हो गया. यस, check out student, server it is printing connection established. How it is printing connection established? Because of this accept method. Someone has tried to connect to this port number. Who has tried? उसका एड्रेस इसमें आ जाएगा और फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश. बट नोटिस वन थिंग ओवर हियर स्टूडेंट, ये सर्वर बंद हो जा रहा है, बट सर्वर तो हमेशा कंटिन्यूअसली रन होना चाहिए ना. यस, सो सर्वर कंटिन्यूअसली रन होना चाहिए. सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट दिस लाइन, ये जो मेरी लाइन है ना, इसको मैं व्हाइल लूप में डाल दूंगी. व्हाइल मतलब जब तक आप अपने प्रोग्राम को, व्हाइल ट्रू व्हाट डज इट मीन्स, जब तक आप अपने प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करोगे तब तक ये सर्वर क्या करेगा? ये सर्वर रन होता ही रहेगा. I hope you all are getting why I am putting this in while loop. Just now I have shown that वो एक क्लाइंट ने कनेक्ट किया, उसके बाद सर्वर बंद हो जाएगा, फिर से आप सर्वर को ऑन करोगे क्या? आर यू गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन एंड अगेन? नो, server is always started and it is always on. So for that I am running what? While loop. Now just see the magic of this while loop. अब क्या होगा? Now again I'll run this server program and then कुछ नहीं हुआ बिकॉज क्लाइंट तो स्टार्ट ही नहीं, किसी ने रिक्वेस्ट ही नहीं किया. नाउ क्लाइंट आई हैव ऑल्सो रन. सो कैन यू सी, सर्वर बोल रहा है कनेक्शन एस्टैब्लिश एंड इट हैज नॉट रिटर्न, इट इज स्टार्टेड ओनली. कैन यू सी हियर बिलो, सर्वर रनिंग बता रहा है और क्लाइंट स्टॉप हो गया क्योंकि क्लाइंट का काम उसने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया. इफ आई रन क्लाइंट अगेन, then my again I'll get what? Connection established and server is on. So I hope you all are understanding the use of this while loop. Yes, are you all getting why I wrote this while loop? I want to start this server, I want to on this server continuously, therefore I'm writing this while loop. Yes student, please type yes if this line is clear to you all. मैंने पहले वाइल लूप नहीं लिखा था, अभी भी मैं वाइल लूप को कमेंट कर दूंगी. तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वर को ऑन करना पड़ेगा मैनुअली, बट ऐसे नहीं चलता है. एक बार सर्वर ऑन कर दिया फॉर अ पर्टिकुलर डे, वो ऑन रहना चाहिए. सो देयरफॉर आई रोट दिस लाइन इन वाइल लूप. वाइल ट्रू का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? जब तक ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा तब तक ये लाइन एग्जीक्यूट होगा. सो दोज हु आर सेंडिंग रिक्वेस्ट, एस्टैब्लिश कनेक्शन टू देम. ओके, अब ये वाली लाइन ने तो कुछ किया ही नहीं. क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सेंड कर रहा है क्लाइंट को, इट हैज सेंड रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, बट क्लाइंट हैज नॉट रिसीव द रिस्पॉन्स. क्लाइंट ने तो लिखा ही नहीं लाइन उसको रीड करने का. सर्वर हैज सेंड और सर्वर हैज रोट द रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, बट समवेयर क्लाइंट शुड रीड दैट रिस्पॉन्स. ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू क्लाइंट प्रोग्राम. और क्लाइंट में हम क्या लिखते हैं? रीडिंग का लाइन लिखते हैं. तो एक्चुअली मेरा एम क्या है? मैं क्या कर रही हूँ?
client is sending message to server, sorry, server is sending message to client. तो अब सर्वर ने मैसेज सेंड कर दिया है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रीड दैट मैसेज. सो फोकस अगेन ऑन योर स्क्रीन. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज बफर्ड रीडर. So this is again a class in Java, buffer reader. इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ. Again it is used for reading data from your network. आप डेटा रीडर, डेटा राइटर भी यूज कर सकते हो. मैं प्रिफर करती हूँ बफर्ड रीडर. ओके, तो बफर्ड रीडर. ओके, सो आपको कहाँ से डेटा रीड करना है? स्टूडेंट प्लीज टाइप फ्रॉम वेयर यू वांट टू रीड डेटा. आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल. I'll wait for a moment. आपके आंसर का मैं वेट करती हूँ बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा लैग हो रहा है. ये क्लाइंट डेटा कहाँ से रीड करेगा? डेटा कहाँ से आ रहा है? यस, सो फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू रीड द डेटा? इट इज गोइंग टू रीड डेटा फ्रॉम सर्वर. यस, फ्रॉम सर्वर. तो सर्वर से रीडिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सर्वर मेरा कहाँ पे बता दिया मैंने? सॉकेट के थ्रू बताया कि मैंने इससे कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश की है. नाउ देन आई हैव टू राइट व्हाट? लाइन फॉर रीडिंग द डेटा. तो रीड करने के लिए मैंने आपको क्या बोला? हम लोग क्या यूज करते हैं? इनपुट स्ट्रीम. ओके, सो वी यूज व्हाट? सॉरी, इनपुट स्ट्रीम रीडर. राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम, रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम रीडर. एंड देन इन पैरेंथेसिस व्हाट यू हैव टू डू? फ्रॉम वेयर यू वांट टू रीड द डेटा. तो किसका किसका डेटा रीड करना है? जो मुझे डेटा नेटवर्क में आया है. सो स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट लाइन है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. बफर रीडर इज यूज्ड टू रीड द डेटा, बट डेटा कहाँ से आ रहा है वो आपको बताना है. मेरा डेटा नेटवर्क से आ रहा है. तो आपको इस ब्रैकेट में ये भी पास करना पड़ेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर. ओके, दिस इज व्हाट सिंटैक्स व्हिच यू हैव टू फॉलो. सो एस, इससे पता चल गया कि हाँ डेटा इस सर्वर से और ये पोर्ट नंबर से आ रहा है. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? दिस br और बफर रीडर इज हैविंग अ मेथड नोन एज व्हाट? रीड लाइन. तो अब क्या करती हूँ मैं? स्ट्रिंग मैसेज. Since I'm using reader writer, so my data will be read in a character format. So I'm using method br dot read line. So whatever server has sent the message, now I have read the message and that I have stored in what? Which variable? I have stored in a variable message. Okay, तो अब मैंने message. ओके सलमा, एस क्लाइंट में लिख, सॉकेट क्लाइंट में लिखते हैं बट उसमें पैरामीटर हमने क्या पास किया है? किसको आपने कनेक्ट किया है? तो क्लाइंट प्रोग्राम में अब एस क्या रेफर कर रहा है? आप वो किसको पॉइंट कर रहा है? सर्वर को पॉइंट कर रहा है. और सर्वर प्रोग्राम में एस किसको पॉइंट कर रहा है? क्लाइंट को पॉइंट कर रहा है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. If you are writing client program, there you have, for creating client program you have to create object of socket, but in client program that socket refers to whom? Socket refers to what? Or it points to whom? It points to server. इसलिए यहाँ पे s लिया है. ss नहीं होगा क्योंकि क्लाइंट में तो हम सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाते हैं. ये लाइन मैंने कहाँ लिखा है? ये लाइन मैं क्लाइंट में लिख रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने सॉकेट में क्या पास किया है? पास व्हाट? लोकल होस्ट एंड 4567. दिस इज व्हाट? एड्रेस ऑफ योर सर्वर. सो नाउ योर सॉकेट इज पॉइंटिंग टू व्हाट? इट इज पॉइंटिंग टू सर्वर. फॉर क्रिएटिंग क्लाइंट प्रोग्राम यू हैव टू यूज सॉकेट क्लास. क्यों सॉकेट क्लास यूज करना पड़ेगा? क्योंकि क्लाइंट को बताना पड़ेगा टू विच सर्वर यू वांट टू कम्युनिकेट एंड ऑन विच पोर्ट नंबर यू वांट टू कम्युनिकेट. सो उसके लिए आपको सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. बट वो सॉकेट ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट करता है? क्लाइंट प्रोग्राम में सॉकेट पॉइंट्स टू सर्वर एंड इन सर्वर प्रोग्राम सॉकेट पॉइंट्स टू व्हाट? क्लाइंट. बिकॉज बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन हो रहा है ना.
तो now here I have read the message using read line method. This BR is having read and read line method. अब मैंने मैसेज रीड कर दिया, अब मुझे क्या करना है, मैसेज प्रिंट करना है. सो वेयर आई एम गोइंग टू प्रिंट मैसेज, आई एम गोइंग टू प्रिंट ऑन क्लाइंट कंसोल, है ना. तो मैसेज रिसीव्ड ऐसे करके मैं कुछ तो प्रिंट कर रही हूँ, और मुझे मैसेज कौन से वेरिएबल में स्टोर्ड है, एमएसजी में स्टोर्ड है. सो व्हाट आउटपुट आई एम गोइंग टू गेट, व्हाट सर्वर हैज सेंड, सर्वर ने क्या सेंड किया है, ग्रीटिंग फ्रॉम सीएस कॉर्नर. सो क्लाइंट को आउटपुट में क्या आएगा, मैसेज रिसीव्ड ग्रीटिंग फ्रॉम सीएस कॉर्नर. सो माय सर्वर इज ऑलरेडी ऑन, आई एम गोइंग टू रन माय क्लाइंट. So can you see connection established third time बता रहा है, because I have run client thrice. And can you see client में it is showing message received greeting from CS corner. Yes. See the message, see the output, it is showing greeting from CS corner, and here it is showing me connection established and server is still on. If I ये क्लाइंट प्रोग्राम बंद हो गया है, मैं फिर से क्लाइंट को रन करूंगी तो फिर से मुझे यही मैसेज आएगा, बिकॉज मैंने अभी स्टैटिक कोड लिखा है, एक आई एम सेंडिंग जस्ट नॉर्मल मैसेज. यस एवरीवन, डिड यू अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम? Yes, student, if understood, please type clear, understood, yes, something like that. Okay, so now one thing I would like to ask you. Here I have sent what? A normal static message, greeting from CS corner. Can you all help me if I want to send a message which user is entering? So how I can do that? आप बता सकते हो? मैं सर्वर को ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे सर्वर में थोड़े चेंजेस करने हैं. मुझे कुछ मैसेज यूजर से लेना है और फिर क्लाइंट को सेंड करना है. कैन यू ऑल टेल मी हाउ आई कैन डू दैट? एंड आई फॉरगॉट टू राइट वन लाइन हियर, आई शुड क्लोज क्लाइंट ऑल्सो. दोनों जगह आपको सॉकेट को क्लोज करना पड़ेगा. This again I'm repeating my question. I want to take some input from user instead of typing this static message greeting from. Yes, very good. स्कैनर लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, स्कैनर ले लो भाई. तो चलो अब ये मैं ग्रीटिंग फ्रॉम यूजर कॉर्नर, चलो ये भी मैसेज, ये मैसेज नहीं सेंड करना है मुझे. मुझे क्या सेंड करना है, मुझे सेंड करना है जो मैं यूजर से एक्सेप्ट कर रही हूँ. सो स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. So in bracket, I am passing system.in. That means it is going to take input from user, and then okay, some mistake. Now I'm going to print SOP that enter something. SOP कर देते हैं हम लोग यहाँ पे. Enter message to be sent. Okay. So whatever message user is going to enter, that I'm storing in one variable str, and आपको तो पता है sc का method. Yes. Okay. Not read line. It is next line. वो buffer reader was in my mind. It is next line. Okay. So now I am having message in my str variable. What I'm going to do? Yes, right. So now what I'm going to do, I'm going to send this message. तो message अभी मेरा print stream है जो किसको रेफर कर रहा है, क्लाइंट को रेफर कर रहा है, तो उसका मैं print मेथड यूज कर सकती हूँ और println भी कर सकते हैं. ओके, डन द प्रोग्राम. अब हमको क्या मैसेज आएगा, डायनामिक मैसेज आएगा, मतलब यूजर जो एंटर करेगा वही मैसेज आएगा. ओके,
कुछ नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो गया? नो, मैंने क्लाइंट रन ही नहीं किया. सो नाउ you can see connection established, enter message to be sent. Okay, so let's send some message. Good afternoon, stay safe. Okay, this is what my message. I'm pressing enter. अब देखते हैं क्लाइंट पे क्या आता है. Can you see it, student, what I'm getting now? Good afternoon, stay safe. This is one way communication. आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, क्लाइंट सर्वर को कर सकते हैं. Okay, so you can see client has received the message. Good afternoon, stay safe. Thank you, Ojasvi ma'am. Okay, now yes, is this clear to you all? It is happening. So no problem. We'll see in next session two-way communication. आई थिंक ये नॉर्मल मैसेज सेंड करना भी स्टॉप कर दिया है. कोई बात नहीं, विल सी इन नेक्स्ट सेशन. ओके, सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डन इन टुडेज प्रोग्राम. सो अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है, एंड इफ यू वांट टू रिसीव द मैसेज यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बफर्ड रीडर. Yes, everyone, is this clear to you all? Did you all understood? So in my next session I'm going to take more program on this, like client will send some number to server will do some computation on client, and then server will return result to the client, and then we may create what chat application also, GUI use करके chat application भी बनाएंगे. Fine, student? Okay, did you all understood? Just type yes, I can show you the program. Just you, if you want, you can take screenshot of this program. Or my video is there. It will be available after this sessions. So you can use, you can see from video also. Okay. So this is your server program. Okay. And this is your client program. Okay. So thank you students for attending this session. In my next session, I'm going to show you two-way communication with GUI. So do attend my next session. Probably it will be tomorrow only, same time. So I'll try to keep at 1 o'clock. And student, if you like this session, please just hit on like button and जाते जाते एक प्यारा सा comment करके जाओ. Okay, bye bye. Have a nice day, student. I hope nobody is having any doubt. If yes, you can ask. QA ले लेते हैं 2 मिनट के लिए अगर किसी को डाउट है, नहीं तो we'll end the session. Anyone having any doubt? No, it's clear. Okay then. Okay, student, then bye bye. Have a nice day. See you in my next session with new programs and new concepts. नो विवेक, क्लाइंट के प्रोग्राम में एसएस नहीं आएगा. क्लाइंट में हमारे पास एसएस है ही नहीं. सलमा वाज आल्सो आस्किंग सेम डाउट. क्लाइंट वी डोंट हैव एसएस. क्लाइंट में तो हमने सिर्फ सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो क्लाइंट में सर्वर सॉकेट कहाँ से आ गया? जो आपने सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, वो सॉकेट किसको पॉइंट कर रहा है? सर्वर को पॉइंट कर रहा है. वो बनाया हमने क्लाइंट के क्लास में है, बट वो पॉइंट किसको करता है?
किसको पॉइंट करता है? सर्वर को। क्यों? क्योंकि हमने उसमें आईपी एड्रेस सर्वर की दी है, पोर्ट नंबर सर्वर को दे रहा है, तो वो सर्वर को पॉइंट कर रहा है। तो आपको डेटा कहाँ से रीड करना है? सर्वर से डेटा रीड करना है, तो इसलिए बफर रीडर में आपको सर्वर का ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, सर्वर का एसएस नहीं, सॉकेट का ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा जो सर्वर को रेफर कर रहा है। वैसे ही जब आप क्लाइंट के लिए बफर रीडर करोगे ना, तो भी उसमें आपको एस का ही ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, दैट इज सॉकेट का ऑब्जेक्ट ही डालना पड़ेगा। यस। यस विवेक, योर डाउट इज क्लियर? Okay, so bye bye students. Take care. Have a nice day.